Hello all of you, all my pretty students. Welcome to your Extramarks ICSE Geography 10th board paper analysis, right? I'm sure all my students will be joining this session for this analysis. And now this ICSE Geography board paper analysis, before starting the session, I would like to tell you that the paper's level was intermediate, from easy to intermediate. Not very difficult questions were there. So we will be looking at the questions also, whether these questions were difficult, easy, intermediate, whatsoever, right? I can see some of them joining the session, and I can see in the chat box, where is Ashi ma'am? Okay, Ashi ma'am will not be analyzing the paper today. I am extremely sorry about the inconvenience, but music shots, I would try my best to be like Ashi ma'am for you, for bringing all those fun and everything in the middle, right? So let's just quickly move forward to your ICSE papers instruction, which is very, very important, especially for topography and maps, right? Rest of the part where you have the objective type and long answer questions, all these were easy, as well as it's very simple to understand the instructions, right? So all these things as an instruction was there. As to part 1 is compulsory. All questions from part 1 were supposed to be attempted. A total of 5 questions are to be attempted from part 2, right? Now, this is where you were supposed to, instructions given to you, how you are going to work on the topography, whether you are allowed to take the map outside the classroom or not, etc. Everything was given to all our students, right? Now, question 1. Obviously, the paper has started with what? Topography, right? Now, questions of topography, what I have analyzed, were very easy. One thing, before starting the topography, I want all my students to understand one thing. Very simple aspect is there when you are doing the topography. What is it? To understand the grids, right? In the grids, you have the vertical lines and the horizontal lines. Very simple to understand. Now, most of the questions that you are seeing here mention two man-made features in the grid 2706, 2905. All these numbers are actually the vertical and the horizontal numbers which are given to you in the grid form, right? So it was very simple. Only few questions where I feel that the students might get confused, which was from a teacher's perspective, it is easy, but from the student's perspective, I am sure these questions, like as in these were minor questions where you have dot 10 R, what does R represents? There are a lot of things that you sometimes tend to forget, because there are a lot of symbols, lot of things that you need to learn and keep in mind when you are solving your geography questions, right? Otherwise, compass directions of Mahudinani, Panswala, again the grid 2909, whatsoever, horizontal, vertical, very easy to understand, right? And one more thing, question number 5 was not very easy. It was an intermediate level question, because here you have to calculate the area in the kilometers. Though again, I will be analyzing the paper from the student-centric perspective, right? Student-centric approach is very, very important when you are analyzing it. So from the student-centric approach, it was an intermediate and not an easy question. Now, this is the map. This is the topography map. Now, this is not the whole one. I have taken the more than half of the map to make it easy and understandable for you. Grids, again, you can see the grid lines here, right? These are all the grid lines, vertical, horizontal, numbers are here, 6, 8, right? And that's how you were supposed to answer the questions which are there. So we will be solving in that way only. Horizontal line, vertical line. Keep in mind, this is very, very important, because, topography, I think this year was very, very easy comparatively with the 2020-21 paper.
The topography sheets were quite difficult if you'll go back to the last 2 years. So it was quite easy. And this is the key. We all know this. We have done this in all our Extramarks classes. A lot of hi Apurva, please stick to us for the analysis of the paper, right? So symbols we have been doing in all those mock tests, in all those regular classes. What are these symbols? How you're going to identify it? So the main idea in topography, as usual, is the grid lines. Grid lines that you have is very, very important. Very, very important. Now you will be asked under 2709, these are the symbols given to you. Now you are supposed to figure it out in the topography sheet, map that is given to you. Under this, what these symbols mean. So if you remember the symbols, it will be very easy for you to understand what they are asking. Right? So the question is like that only. So give the 4-figure grid reference for 2 to 4. Now this is what the map. I have cut it out for your convenience. And we were supposed to see the number 27 in the vertical line and 06. You have to see the grid. Here, this falls under which box? You were supposed to figure it out, the lines. So the horizontal lines as well as the vertical line. 27 is this in the map. 06 is the horizontal grid map here. So the answer is 2706. That is your correct answer for marking this height, 2 to 4 elevated height, right? Now let's just not go to the answer first. What is the counter interval used in the given map extract? What is it? What is the counter interval, right? Now the counter interval was 20 in the map. Now this you will say, ma'am, how have you got this 20? From where have you got this, right? So for this you have to first understand what are counter lines. So it's very easy. Counter lines is one thing which you have throughout topography. So what are contours? What are counter lines? If you will keep on practicing topography, this is a very halwa, what you can say in students' languages, what we use. It's very simple to understand. So these are the kind of counters usually which you see in the map, drawn like this. Some shapes are like this, some shapes are like this, right? These are all the shapes that we see, right? These are all the contouring lines that are usually there in the topography map. Now the intervals, they're asking the question, counter intervals that you have seen given in the map extract. So if the map which was given to you, you were supposed to analyze what were the multiples, the difference between these multiples, right? Difference between these multiples. So there were multiples of 20 given here. Multiples of 20. This is given in the map. And this was very, very, very easy one. If you know what are contouring lines, it was very easy for you to identify. So the contouring intervals were 20, right? Moving on to the next question. Mention 2 man-made features seen in grid square. Now grid square I've already told you. If you know the vertical and the horizontal grids, very simple for you to understand and figure it out. Where 27, say suppose this is 27 in the map. This line vertical you will see. And say suppose this is 06, the horizontal line. Say suppose, right? So where does it fall? Say suppose it is falling here, right? So you have to figure it out under this grid which is there given. What are the man-made features over here? You have to figure it out, not the natural one, because in the next question, the paper has been made this way to make you confuse. Immediately after the man-made features that you are supposed to analyze, they have asked you, tell us the natural features which are there in so and so grid. We'll be moving on to that question, right? So here you have 27, 6 drawn like this roughly only. So you have to figure it out over here. These, you have the temples here,
You have the chhatris here. You have many man-made features. You have to figure it out. You have the covered tanks here. See, covered tanks. Absolutely given here. It's written. Not even the symbol is given. It is written here. Right? So it is very easy. If you can understand the grids, the vertical and the horizontal lines, contouring lines, the paper would have been very easy for you to solve. Very quickly, I think not more than 15 to 20 minutes would have been required for you in solving topography sheets, because these were quite easy, right? Now mention the two, as I have told you, man-made features. Here you have to figure it out. The natural features. Now natural features, again, what are these? What do you have here? You have rivers here, given here, right? You have sand dunes here. See, here lot of things are given here in the natural form. So you were supposed to figure it out. See, lot of these tube wells are there, spring tanks, perennial dry. All these are the signs that you can see it here, right? So these are the natural things that you were supposed to figure it out. See, bamboo, trees. You can see trees here. Can you see it? You know, basically the main idea of giving topography to ICSE students, and why CBSE, there are a lot of questions, debate goes on as to why CBSE does not follow that, why ICSE follow that, and a lot of tussle between the students. It happens, right? This is basically to make you a good absorber or observer, right? When you observe things, when you're keenly into what is going on in the paper, it is to make you sharp enough to understand maps, to understand all these lines. These are the basic idea of giving you topography, right? Good evening, Palmu, lot of you. Good evening, lot of you joining the session. Very warm welcome. Please stick to us for this analysis, right? And see, sand features, permanent sand dunes are there, right? So shown you were just supposed to tell us to in your paper as to natural features that you have in the grid, right? So very simple to understand. What do you understand by 1:50,000 printed below the map extract? Now this was something which is always there given to you. When you have that topography sheet given to you, where you have the symbols, the keys given to you. I won't be moving back to the previous slides. You have all the keys given to you there, right? When you have all the keys given to you, over here there is a small box where numericals calculations are there, and 1:50,000, say suppose lot of numericals are given here. So this is basically to make you understand what is the representation of centimeter, kilometer. All these things are given there. So if you will see the keys, you will be easily calculating what is the answer, right? So 1:50,000 means 1 unit of the map. 1 unit of the map, say suppose, represents 50,000 units on the ground, right? So 1 centimeter represents 50,000 centimeter, and 2 centimeter is equal to 1 kilometer on the map. Take any grid that you are taking on the map, right? So 2 centimeter is equal to 1 kilometer. So that is what your answer was. Map extract. So that was your map extract. Complete whole map extractions. And this was a very repetitive question. Lot of questions come from the key part. If you will see 2019, 20, 21, 22 paper, one permanent question comes from the symbol and the key part, which is given to you. One permanent question, one numerical question is always there. And it is very simple to get the answer from here, right? Now, what is the pattern of drainage seen in grid again? Grid square 2505. That is the main idea of topography, right? Horizontal, vertical, grids 2505. Grids you have analyzed. Now, within this, you have to figure it out, the pattern of drainage seen here, right? So, what is the pattern of drainage seen here? Lot of Adriatic, like pattern here, right? Now,
what do you understand by 10R? This is the question which I was saying and asking from all of you as to few of the words usually are given to you, and you are basically, minor things they want to see whether you remember those things or not, right? So what do you understand by 10R in 2709 is the grid? So what do you understand? R is the relative unit, right? So this is the name of the place, and this is what Panswal, or say suppose the river, whatsoever what the place was there, you were supposed to answer that within the grid. So it was very, very easy to understand, right? What is the compass direction of Mahodinani and Panswala? So if I'll go back to the previous slide, see, it's here only. Right? So the same grid, most of the time what they do is, they don't take the whole map. What they do is, if you will see the direction, west, east, north, south. This is what they do, right? So what they do usually is, they either take this part of the map, they either take this part of the map, they either take this part of the map. This is what usually they do. They don't ask questions from all sides. So either they take southwestern part, northeastern part, right? So they try to, the question or the grids again and again, 2-7, I am sure 2-7-2-5, we have seen consistently that vertically those grids have been constantly asked. Means questions, lot of questions come from the southwest or the northwest direction. So that part of the map has been taken for asking you the same question and again, right? So over here also you see, this is the portion highlighted in the red, right? So here you have the river flowing, right? Southwestern. That is your answer, right? So Mahodinani, Panswala, if you will zoom, you have all these river flowing from, sometimes what happens is, Mahodinani is here, right? And you can see it here. See, what happens is, sometimes if you are drawing Ganga, say suppose, what they do is, right? Now if you are drawing Ganga, they will write Ganga here. But Ganga does not mean that it's a man-made thing, right? You have just drawn a temple or a mosque or a church here, and it will remain here. No, Ganga is flowing, right? So you have to identify, you have to look in the map when you are marking the river. Where is it actually going, right? Panswala is here and Mahodinani is here, right? So that is where you were supposed to analyze where the compass is moving. Now calculate the area in the kilometer square region enclosed between easting 26 to 29 and northing 05 to 11. So this is the same. Northing, easting, both the horizontal and the vertical part. So I'm telling you again and again, what they do is, they give you repetitive questions, and certain portions they take it in that way only, right? So easting is 26 minus 29, 3 is the answer. Northing 05 minus 11 is the 6 is the answer, right? So you just, what is the calculation over here is, you subtract what the number of eastern and northern number is given to you. Subtract it, you get the answer, and number of boxes you have to count. Say suppose the east, just take the before slide. See, so you have to count the boxes. What were the boxes, right? So the boxes over here was 6 into 3. So you have to take both the vertical and the horizontal boxes, and that's how you will multiply it, right? So area of boxes, 1 square kilometer, 2 centimeter is equal to 1 kilometer. That was your extraction of the map, right? In the previous sums, you have figured it out, right? So that's how, even if the previous question where you were supposed to do the extraction, say suppose that question was not given to you in the paper, then what would you have been done? Students joining the session, what would have you been done? So you over here at this point of time was supposed to calculate the extraction of the map first for coming out to this,
right? And then you will bring out the area of the 18 boxes, which is 18 square kilometer, because one box, one grid is equal to 1 square kilometer, right? Scale is, again, this question was there, right? 2 centimeter is equal to 1 kilometer, and that's how you were supposed to tell us. You were supposed to calculate, you were supposed to give us the numbers and extract easting of 26 to 29 and northing of 05 to 11. That was your question, right? And this was your solution. You were supposed to give it to the teacher, to the examiner who is checking your paper, would see how you have bought these 1 kilometer, extraction of the map, right? Very easy. Topography was very, very easy, right? Now, few of the things which I have seen while doing not topography, as I have already told you, topography was easy. It was from easy to intermediate level. No difficult question. Only one question related to relative height was there, R symbol. But that you can neglect, right? Now, outline of the map. Now, while doing the maps, I have found that most of the questions were repetitive in nature. If you would have attended all my classes from geography, Ashi ma'ams, and lot of classes taken by Varun sir, lot of teachers who have been associated with you while doing your classes for geography, I am absolutely sure that all of us might have told you that all the gulfs of Kutch, deserts, rivers, all these things are very, very important, including the mountain ranges, right? So, Karakoram ranges are here. Soils. I have given you a lecture on types of soils. And I remember that I have told you, don't just remember the composition of the soil. Try to mark on the map where you can get these soils, in which region, in which state, in which cities, right? So even if you would have done it on the basis of state, it would have been very easy for you to mark, at least shade the area where you get alluvial soil, or shade and label the partially populated region in the western India, right? So these are the answers. So mark and label Satpura. You can see it here, Satpura ranges, right? Now they're asking you shade and label the Gulf of Kutch. You have the Gulf of Kutch here. Very easy, because this is something, these are the major portions, right? These are very, very important. Nothing, I think, has been out of the syllabus or very difficult from where it has come, right? So nothing like that was asked, right? Mark and label Delhi. Delhi is the capital city. Very, very easy to understand, right? Here. Mark and label 80 degree, 30 E longitude you have to mark, right? Have the longitude here with us, right? Then mark and label Jharia coalfield, very simple to understand here, right? Mark with arrows and name the southwest monsoon winds, right? So you have the southwest monsoon winds here flowing, right? All these marked here, right? Then you have mark and label the Karakoram passes. So with arrows you were supposed to mark, right? So that is how the arrows have been put here, right? Mark and label the Karakoram passes, right? Karakoram passes, you can see it here. It's absolutely given here, right? Very simple. Even the maps were quite simple. It was not very difficult to understand, right? 9 and 10, alluvial soil and sparsely populated Western Indian regions, right? You have 10 here, right? And 9 is here, shaded one, right? This sparsely populated region of the Western India, shade the alluvial soil here. So you find alluvial soil somewhere near the Himalayan ranges, right? Very simple to understand. Nothing was very difficult in the paper, especially related to
I can see lot of Gracie, Aishwarya, Sajju. Very, very warm welcome, Aishwarya. Oh, you got 9 out of 10. Very nice in the map. Very good. 9 correct. Very good. I can see Gracie here. Gracie, if you would elaborate me how and what are you supposed to asking, I would help you in that. 10 out of 10, NK Gamers, very nice, very good. Very good, very good. Yes, Tanya Sen, lot of you joining the session, 10 out of 10. That is why I am saying that even the maps were very easy. Everything that was asked were very basic one. Nothing was very difficult as to they are asking you some district or some cities, you know, it is very difficult to mark, or maybe very difficult rivers they are asking you to mark. So everything in the map was very, very easy. So I can see lot of my students telling me that 10 out of 10, 9 out of 10 in map is a very, very good marks. Very good marks. Great work, all of you. Very nice. Very good. Tanya, stay connected. Aishwarya. Very nice. Aishwarya is, I think, Aishwarya's favorite subject is SST because she never misses any of the analysis, lecture, classes, mock tests. So that's a very, very good thing. And a lot of you are today with us. Stay connected. One by one, we'll be solving all the questions and analysis will be given to you, right? So in the question 3, choose the correct answer, right, to the question from the given options. So these are the options that are given to you and you are already instructed that please do not copy the question. Very easy. You don't have to copy the question because it takes a lot of time, right? Which of the following area receives rainfall from the northeast monsoon? Konkan coast, Ganga basin, Coromandel coast. What is the correct answer? Will anyone? Aishwarya is saying C. Tanya, you're most welcome. So don't go with these, you know, that I have marked, right? I was just trying to make it easy for you while marking. So the correct answer, a lot of you are saying C. Absolutely right. It's Coromandel coast because then, you know, area receives from the northeast monsoon, right? So northeast monsoon from here, right? Which of these are most widespread soil in India? Widespread, very easy question. This is very easy. Please don't tell me. I don't think that any one of you would have got it wrong. Very easy one. Widespread. Very good. Alluvial soil. Absolutely an alluvial soil drawn here, right? The ranges. Here you find it. Right? The whole ranges where you get it. Very easy. Alluvial soil. Which type of forest found mostly in the coastal area of India? Coastal area of India. Which type of forest? So again, if you remember all the types of forest, tropical deciduous, tropical evergreen, lot of forest, if you would have got it, you would have absolutely got it. It's a littoral forest. Even if you know what deciduous forest is, tropical desert is, tropical evergreen is, you would have easily figured it out that, you know, what is the correct answer. So mostly in the coastal regions, you have the littoral forest type. Which of the following is the groundwater source? Again, very, very easy question. And I'll tell you, you all are my ICSE batch and this is an ICSE paper. But this question has been a very favorite, loved question of NCERT. CBSE usually, you know, lot of questions they usually ask from groundwater sources or freshwater lakes, questions related to water. So it was again a very teacher's favorite question again. So it's the spring, right? That is the groundwater source. Which of the following is the groundwater source, right? Copper is alloyed with zinc to form. Now over here, I would say this was an easy question. But yes, even if it was not easy, it was not very difficult as well. These are the questions which are given to you on your exercise. After when you finish the chapters, it's confusing. Tanya is saying confusing one. Yes, but these are the questions that are given to you already in the exercise form. If you will try to,
turn the pages after the chapter, you would see there. It's given there. Oh, Aishwarya is saying that she made a mistake here. That is why I'm telling you. This was not very easy, but this was not very difficult also. It was an intermediate level question to make you confused, right? So, brass is the alloyed. When you alloyed it, when you mix it, copper and zinc, this is the form that you get. Now, Hirakud Dam. This is, again, Hirakud Dam has been Bhakra Nangal Dam, Hirakud Dam, all these dams were very, very important from the examinations perspective, right? So I won't say that this was again a difficult question. No, it was a easy question because all these are very, very, very important one. Very important. If you are not revising, not learning, not going through these questions, it means you don't have a strategic approach to examination. So if you have a strategic approach, you got it absolutely correct. River Mahanadi, right? Which of the following is not a problem of Indian agriculture? Very easy. Not a problem of Indian agriculture. Two main cropping seasons are not a problem of the Indian agriculture at all. Why would it have been a problem? We don't have all these seasonal problems, right? Two main cropping seasons is not a problem for us. We deal with it on a very regular basis, and it also facilitates the cultivation, the agricultural जिसको हम कहते हैं खेती बाड़ी का उत्पादन, मतलब और ज़्यादा enhance करना उसको, है ना? तो वो हमारे लिए कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं. हाँ, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स प्रॉब्लम रहा, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून भी कभी कभी प्रॉब्लम रहा क्योंकि कभी कभी सूखा पड़ जाता है ना? तो दैट्स हाउ यू नीड टू एनालाइज द क्वेश्चंस नाइसली. Now, which of the following is the basis of the key industry? Following is the basic or key industry. Which of these? Quickly. Tanya, Aishwarya, I got the answer from Aishwarya. I want answers from Tanya, Shubhangi. Lot of you joining the session. So, iron and steel. Obviously, this was a separate, if you go back to the lectures that I've given you on iron and steel, silk industry, cotton textile industry, the history of learning about the industrial revolution, very, very important. Iron and steel, right? Which of the following is a staple food grain of Indian? Very common question again. I won't say that ICSE has done injustice to you or given you a very difficult question. No. None of the questions were very... I am telling you from the student-centric perspective. Don't think that, ma'am... Very good, Aishwarya. Aishwarya also feel that it was very easy. So don't think that, ma'am, you are a teacher, so it's easy for you. Because you teach. So you know everything. No, it's not at all like that. But the paper was very easy. Genuinely, it was easy. Which of the following is the staple food grain of India? Obviously, rice. I am sure all my students know that from 65 to 73% of the population in India eats rice. Whole northeast, right? This side, no, south, whole of, Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, northeast, even in Kashmir, Himachal, lot of them. Only some of the northwestern region people, are dependent on wheat, on flour and eating roti, chapatis and stuff. Right? Most of us eat rice. Right? Which of the following? I'll tell you a very interesting thing over here. I want to take few of a minute and want to give you a very interesting thing about rice and wheat. Very easy for you to understand. Don't generalize it, but understand this way. You know what happens is, if you'll cut R, it's ice here. Right? And if you cut W here, it's heat here. So what they say, when you go to South India, or even when you go to the northeast region, what will happen? Usually the people say that South Indian people and northeast people are very cool in nature. They're very polite. They talk very nicely. They're very calm down people, very, very calm and composed type. And they say, it's just a funny fact. I'm not going to generalize it. There may be people who are aggressive in South also, but they say that what happens is they eat rice, and when you cut R, it's ice. So that is the effect, right?
And what happens in the north western India? Most of them are dependent on eating wheat, right? So if you cut W from here, what is left? Heat. So most of them are very aggressive. I'm not generalizing, but that's how, when you learn about the facts or the difference between the northwestern people and southern people and northeastern people. So these are funny facts which are always given there. Even if you Google, it's given there, right? Very good, Aishwarya. Oh wow, that's great, Aishwarya. So I'm sure Aishwarya eats rice, and that is why she's a very calm and composed person. I'm sure all my students would have been. But this is something which usually, they say it like that. So that's a fun fact about rice and wheat. Anyway, coming back to the question, which of the following method of waste disposal is harmful? So if you would have gone through the waste management or learning about the recycle, reuse and reduce chapter, would have been very easy to understand that dumping is something which is very harmful. Open dumping is there, and even in the coming question paper analysis that I would be doing, you will figure it out that you have questions from open dumping also. Advantages and disadvantages of it. Very easy, right? Now we have come to part 2. Name the seasons of India. Part 1 is completed. All questions from part 1 was compulsory. This is what we have gone through the instructions. Very good. Ramadevi is saying all my MCQs. That is why students, मैं आप लोगों से बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों के MCQs, मैप, टोपोग्राफी बिल्कुल सही जाने चाहिए. अगर आपने जेन्युइनली रिविजन किया है, जेन्युइनली स्ट्रैटेजिकली, अगर आपने सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स के क्लासेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं टीचर्स का एडवाइस की भी बात कर रही हूँ. आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा. यू माइट हैव गॉन थ्रू ऑल द लास्ट 5 years 10 years पेपर्स, है ना. ये करते हैं बोर्ड्स के बच्चों के लिए, बहुत कॉमन है, करते ही हैं. तो अगर आपने ये सब कुछ किया होगा तो आपको इम्पोर्टेंट पता चल गया होगा कि कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है. यूजुअली कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कहाँ से पूछ सकते हैं से ही क्वेश्चंस आया है. कोई भी आउटसाइड ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि 5 साल तक नहीं पूछा, आपने सोचा अरे ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, 5 साल तक नहीं पूछा तो हम नहीं करेंगे, है ना. ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है. जितने डैम्स हैं, जितने माउंटेन रेंजेस पूछे हैं, जितने कॉमन क्वेश्चंस वेस्ट के बारे में आए हैं, वाटर के बारे में आए हैं, बाकी चीज़ों के बारे में, वो सब कॉमन क्वेश्चंस थे. तो आपका आई एम श्योर क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे, है ना. तो हम पार्ट 2 में आ गए. नेम द सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन. ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था? जल्दी से मुझे बताइए. रामा देवी, यस. सी ऐश्वर्या को भी समझ में आ गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो 10 years से ही आए थे. इसका मतलब रिपीटेटिव थे, तो बहुत आसान था. ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट था, है ना. आई कैन सी लॉट ऑफ यू 10 out of 10. तानिया को भी MCQs में 10 out of 10, सबको 10 out of 10 है. ऐश्वर्या कह रहे कि उसका 8 सही है 10 में से. बट ऐश्वर्या, दैट इज ऑल्सो अ गुड मार्क्स. इवन इफ यू आर गेटिंग 6 to 7 out of 10 इन MCQs, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज 2-3 मार्क्स आप अपने सब्जेक्टिव में भी ऊपर नीचे बैलेंस कर लेते हैं. तो इतना सोचने की बात नहीं है. डोंट टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट. सो दिस इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया. There are 4 seasons. Dates of the season was very easy to understand. 2 marks में इतना भी अगर आपने लिखा होगा, चारों सीजन्स के नाम लिखे होंगे और बस मंथ लिख दिया होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. आई एम गिविंग यू अ गारंटी. हाँ, लेकिन इसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि दिसंबर की जगह हमने अक्टूबर कर दिया तो टीचर हमें मार्क्स दे देगा. अगर हमने ये भी कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दिया, तो इसमें हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, शायद डेफिनेटली कटेंगे. बट ये सही होगा तो एब्सोल्युटली फुल मार्क्स, राइट. व्हाई मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स आफ्टर द समर सीजन. बहुत इजी था इसका आंसर कि कॉज बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मंथ्स. हमें पता है कि कैसे हमारे विंड्स जो है, साउथ वेस्टर्न विंड्स जाते हैं, फिर यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट होके वापस भी आते हैं टेरिटोरियल लैंड से, है ना. अगर ये हम
ऐसे इस तरीके का अगर हम मैप भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजी है विंड्स और मॉनसून्स को समझना. तो हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मॉनसून सब्सिक्वेंटली कॉजेज मॉनसून. राइट, बहुत आसान था इसका भी एक्सप्लेनेशन देना. ओके, सो लॉट ऑफ गिव अ ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ज्योग्राफिकल रीजंस देने हैं. आप देखोगे, नोटिस करोगे ज्यादातर पेपर में जो है साउथ वेस्टर्न रीजन्स के क्वेश्चंस जो है, चाहे वो मॉनसून से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो मॉनसून विंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोस्टल रीजन से रिलेटेड हो, साउथ वेस्टर्न से. आप देखो, मैंने आपको टोपोग्राफी में भी मार्क किया था ना, टोपोग्राफी का भी इतना हिस्सा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ. ईस्ट जोन से क्वेश्चंस कम थे और इसमें भी ईस्ट जोन से क्वेश्चन कम थे अगर आप एनालिसिस करोगे तो. सो द मैलाबार कोस्ट आपको बोलना है कि receives heavy rainfall in the month of July, but Coromandel during this time remains comparatively dry. What? Why? Right? So if you see, receives heavy rainfall from the Arabian Sea, right? Branch of southwestern, देख लो आप, monsoon. While Tamil Nadu receives scanty rainfall, located parallel to the Bay of Bengal, right? Branch lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch, right? क्योंकि वहां से तो ये extract होके अपना बोलते हैं ना, रुख बदल लेना, वो बदल लेता है वो, है ना. तो इसीलिए रिलेटिवली ड्राई हो जाता है. तमिलनाडु रिलेटिवली गेट्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज ऑफ दैट. पंजाब रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन्स, ये आपको बताना है. व्हाई? ड्यू टू साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन सी. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि आपको ड्रॉ करना है, फिर याद करना है, फिर समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं था. डिस्क्रिप्टिव नहीं था, बहुत फैक्चुअल था. तो अगर आपको फैक्ट्स याद है, बहुत आसानी से यू वुड हैव डन इट. राइट, मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. व्हाई? बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी. वेरी इजी, राइट. तो ह्यूमिड होता है, एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है बिकॉज इट इज कनेक्टेड एंड सराउंडेड टू द सी. फैक्चुअल है. हम तो घर पे भी बहुत सारी बातें इस तरीके की करते हैं. क्यों मुंबई में मौसम जो है पूरे साल कंपैरेटिवली मॉडरेट रहता है, चेन्नई में भी मॉडरेट रहता है, कोलकाता में भी मॉडरेट रहता है. व्हाट इज द रीजन? राइट. अब बाकी रीजन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में क्यों गर्मी रहती है इतनी? तो वो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन था. तो सी भी बहुत इजीली आप लोगों ने हिस्ट्री मैप फिलिंग प्रैक्टिस कराओ आप. बेटा मुंबई मॉडरेट, यहाँ देखिए आंसर लिखा है, बिकॉज इट फॉल्स नियर द सी रीजन. राइट, इट हैज द होल कंपैरेटिव रीजन ओवर हियर व्हिच इज सराउंडेड बाय सी. सो हेंस इट एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट. वेरी इजी, है ना, क्योंकि सी के सराउंडेड होता है ना, तो उससे आपका मॉर्निंग में अगर मॉडरेटली आपको सन फेस भी करना पड़ता है, स्क्रॉचिंग हीट नहीं होती. बिकॉज जो है, because of the sea surrounding, you get the cool breeze, air is there, and also water. When what happens is, थोड़ा सा भी सूरज होता है तो इस water region से पानी जो है सूरज evaporate करता है, and then it forms cloud and monsoon और rainfall is experienced there. तो usually बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती भी है तो फौरन बारिश हो जाती है ना. तो इसलिए क्लाइमेट मॉडरेट है, बैलेंस कर लेता है. गर्मी हो रही है तो बरसात से बैलेंस हो जा रहा है ना. ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन सी ड्यूरिंग द विंटर, ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स ईस्ट. आप देखो ना, मेडिटेरेनियन सी से ग्रेजुअली इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट. ऐसे ईस्ट ग्रेजुअली रीचेस इंडिया. दिस कॉज विंटर रेनफॉल. ये हमें मैप में समझने की जरूरत है. अगर आपको मैप के डायरेक्शंस पता है, इस तरीके से विंड्स जो है ईस्टर्न रीजन में फ्लो करता है, एंड दैट्स हाउ यू नो शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट, रीचेस इंडिया एंड कॉजेस विंटर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ये हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है और इस तरीके से हमें वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलता है. पंजाब रेनफॉल जो है हमें मिलता है ना.
आप देखो अब ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजी था। आप मतलब हमें अगर ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हमें लगेगा अरे न्यूमेरिकल्स आ गए, ये तो मतलब आते हैं वैसे तो न्यूमेरिकल्स, कई बार नहीं भी देते बट कई बार दे भी देते, तो मोस्टली हम 70% लेके चलेंगे कि आता ही आता है ना न्यूमेरिकल्स। अब आप सोचोगे न्यूमेरिकल्स दे दिया हमें ऐसे क्वेश्चन में, बट न्यूमेरिकल्स बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि एनुअल रेंज निकालने के लिए आपने ये देखना होता है कि बीच का टेम्परेचर कौन सा है। बीच का टेम्परेचर जो है, जैसे जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर पे देख लो मैक्सिमम कौन सा है, 28 है मैक्सिमम, है ना। देखो यहाँ पे है 28 ना, 28 मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है 21। इसी में देखो आप मिनिमम जो है 21, 21, 21, 21 से नीचे तो कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, मिनिमम वही हो गया। माइनस करोगे 7 डिग्री आ जाएगा, तो आपका पहला आंसर आ गया एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन एक्स। एनुअल रेंज ऐसे ही निकालते हैं हम, अगर प्रॉफिट भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसको माइनस ही तो करते हैं ना। हम अपना एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग को हमारा कैलकुलेट करते हैं, फिर उस तरीके से हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट बना हमें, है ना। तो उसी तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर आंसर निकल जाता है हमारा एनुअल रेंज क्या बैठ रहा है टेम्परेचर का। नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस सीजन, राइट। आपका एनुअल रिट्रीटिंग मॉनसून है, क्योंकि मोस्टली आप ऐसे भी देखोगे, जनरलाइज भी करोगे आंसर को, तो रिट्रीटिंग मॉनसून ही आपका आंसर बनेगा, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी गॉट इट दैट द रेंज ऑफ द maximum temperature is 28. Now when the maximum range of the temperature is 28, the climate of that particular area or region is mostly experienced as retreating monsoon only. So this was very easy again to understand. On which coast of India is station X located? So east coast. क्यों बता रहा है ये आपको east coast? It is located here in the region. If you'll see the map like this, it's located here in the region. It's the east coast where we are seeing it. Station X is located. बार बार बोल रही हूँ आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर टू मिनिमम टेम्परेचर, मॉडरेट रीजन्स हमें देखने हैं, कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, मेंशन एनी 2 causes of soil erosion in India। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सॉइल इरोजन समझना क्या इतना डिफिकल्ट है सबके लिए, बताइए मुझे। वेरी गुड, डिफॉरेस्टेशन। बताइए, मेंशन एनी 2 causes of soil erosion, 2 causes of soil erosion in India। बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, हेवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड फर्स्ट का आंसर है। मेंशन एनी 2 कॉजेज, रेनफॉल, ओवरग्रेजिंग, बैड फार्मिंग, ये सब बहुत कॉजेज है सॉइल इरोजन के। सॉइल कैसे इरोड होता है एक लैंड पे, ये लैंड है हमारा, ये सारे सॉइल्स है हमारे, है ना, ये इरोड कैसे होगा, तो उसके बहुत रेनफॉल से इरोड होता है क्योंकि बह जाता है। Overgrazing, if most of the animals would come and graze on these lands, obviously the soil would be exploited, right? Bad farming techniques, sometimes farmers exploit it, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको खुद भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, है ना। तो वो कई बार वो बहुत अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उससे भी हमारा सॉइल इरोड होता है ना। वेरी गुड, केमिकल फर्टिलाइजर, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज। देखिए ये मैंने अपने इसमें नहीं डाला है, लेकिन स्टूडेंट इज आंसरिंग योर ओवर ग्रेजिंग, या आप बोलो केमिकल यूजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपको बोला गया 2 कॉजेज देने। सो इट्स वेरी इजी, राइट। नेम 2 सॉइल कंजर्वेशन मेथड दैट मे बी प्रैक्टिस इन द एरिड एंड द ड्राई रीजन। सो सॉइल कंजर्वेशन मेथड, शेल्टर बेल्टिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना। आपको बताना है ड्राई रीजन्स में सॉइल कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो। तो ड्राई रीजन्स में हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बाकी चीजें आप नहीं कर सकते क्योंकि वो हो ही नहीं रही ना वहां पे। कैसे सॉइल को कंजर्व करोगे? प्लस स्कैंटी वेजिटेशन होने की वजह से हर्ड्स को भी बहुत ज्यादा हम ग्रेज नहीं, ग्रेजर्स हमारे पास
बहुत ज़्यादा अगर हम रखते भी हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको खिलाओगे कहाँ से, है ना। तो बेल्ट्स जो होते हैं हमारे, जैसे ये हमारा ग्रीन बेल्ट है, समझ जाओ ये हमारा ग्रीन रीजन है ना। तो इस ग्रीन बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम शेल्टर करेंगे, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेल्टर बेल्टिंग। अब ये शेल्टर किसी भी तरीके से भी हो सकता है, कोई फेंसिंग का इस्तेमाल हो सकता है, किसी तरीके की और चीजें। स्ट्रिप क्रॉपिंग ये होती है बेटा, व्हेन यू स्ट्रिप द एरिया, क्या होता है, उसको काट देना या उसको अलग कर देना। कुछ ऐसे एरियाज जो ज्यादा प्रोडक्टिव है उनको अलग से प्रोटेक्ट करके रखना, उनके सॉइल्स को अलग से कंजर्व करके रखना, है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। या आप ये भी बोल सकते हो कि उसको बोल सकते हो डुअलिटी के पर्सपेक्टिव से आप उसको डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ यू डू द क्रॉपिंग एक्टिविटी, राइट। सो शेल्टर, ऑब्वियसली वर्ड, स्ट्रिप, obviously the word gives you a very brief idea of what actually the soil conservation method is dry region में। बाकी तो आप नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो सॉइल कंजर्वेशन के, क्योंकि हमारे यहाँ रिट्रीटिंग मॉनसून ज़्यादा फॉल करता है और क्योंकि हमारे यहाँ पे वेजिटेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जो ड्राई है, बाकी तो मोस्टली हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमारा क्लाइमेट है। एक जनरल तरीके से देखा जाए इंडिया का क्लाइमेट है, तो उसमें इतना एरिड रीजन्स में जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है उसको कंजर्व करने के लिए वहाँ पे सॉइल वाटर की चीज़ें हमारे पास टेक्निक्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। सॉइल का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और मैंने बार बार हर क्लास में बोला है कि कॉम्पोजिशन सॉइल के हर तरीके के, एलुवियल सॉइल के कॉम्पोजिशंस क्या है, ब्लैक सॉइल के कॉम्पोजिशंस क्या है, लेटराइट सॉइल के कॉम्पोजिशंस क्या है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। और मैंने ये भी बोला था कि आप उसको मैप में मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, ताकि आप करते रहोगे ना, याद करते रहोगे। वेरी गुड। देखिए हमारे पास डेविल फिनिक्स जो है वो हमें बता रहे हैं कि ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है ना। इट इज अ फाइन टेक्सचर्ड, क्ले इन नेचर, रिच इन ह्यूमस, है ना। इट हैज मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, मॉइस्ट रिटेन कर लेता है ना, रिच इन ह्यूमस। बहुत सारे उसके ऐसे तो बहुत सारे और भी फीचर्स है ब्लैक सॉइल के, लेकिन हमें क्या बताना था, हमें 2 बताना था। ये तो मैंने 3 दे दिया, और भी होंगे, है ना, तो आपको 2 बताना है। कोई भी 2 लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा। नेम द सॉइल दैट इज फाउंड ऑन द समिट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स ट्रिप्स में बटा हुआ है ना, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूड है ना। दैट इज सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, दैट वेरीज इन टेक्सचर। Laterite soil for 1, black soil for B, alluvial soil for C. ठीक है, this varies in texture. This is suitable for dry farming. Laterite is found on the eastern and the western Ghats. Eastern Ghats, western Ghats. Right? Very simple to understand. Not a very difficult one. Factual था. कुछ ऐसा बहुत अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, है ना। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, जियोग्राफिकल रीजंस देने। सो टेरेस फार्मिंग इज एन आइडियल सॉइल कंजर्वेशन मेथड फॉर हिली एरियाज. Other soils are preferred over bhangar soils. Why? And foothills of the Himalayas have been affected by soil erosion. So on the hilly slopes क्या होते हैं, terraces act as a bunds and prevent the soil from being washed away by the running water. क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे माउंटेन रीजन्स में, जब हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, स्पेशली हम ये वाला रीजन जो अपने मैप का देखते हैं, या ये बीच का हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जब देखते हैं, हमें पता चलता है कि टेरेस फार्मिंग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है हिली रीजन्स में ना। हर हिली रीजन्स में, हिली स्लोप्स में टेरेसेस को बनाया जाता है एक तरीके से। वो फार्मिंग, वो आप ऊटी जाओगे, आप मुन्नार को देखो, आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आओगे, जितने हमारे हिली साइड्स हैं, आप मणिपुर चले जाओ, उससे आगे के रीजन्स चले जाओ, इवन व्हेन यू विल गो टू कश्मीर साइड्स इन द वैली, इन द हिली स्लोप्स, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, दार्जिलिंग देखो आप, है ना, हिली स्लोप्स है हर जगह, तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग बहुत कॉमन है. बंड्स एक्ट एज अ बंड एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे, क्योंकि बंड्स के तरह टेरेस फार्मिंग में उस तरीके की ये लाइंस, ये बंड्स, ये स्ट्रिप्स
जो है वो बनाई जाती हैं ताकि द बेसिक क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज नॉट वॉश्ड अवे विद द रनिंग वाटर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिली रीजन्स में बारिश नहीं होती, होती है, राइट? तो उससे आपको रनिंग वाटर की वजह से the soil from the land, from the root is not washed away. Khadar soil is more fertile than the bhangar soil. खदर सॉइल इज मोर फर्ट, जबकि उसका नाम खदर है, खुदरा। हमें लगता है ये समझने के लिए ना आपको बस इतना समझना होगा कि खदर खुदरा हम समझते हैं, लेकिन हमें इसका उल्टा समझना है कि खदर सॉइल इज मोर फर्टाइल। उसको खुद खदर का नाम दिया गया जरूर है, बट आप इससे याद रख सकते हो कि इसका मतलब उल्टा है ना, मोर देन भंगर सॉइल। तो इसीलिए जो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है हम उसी को प्रेफर करते हैं उसके ऊपर। व्हाई वुड वी गो फॉर अ भंगर सॉइल जिसमें कल्टीवेशन ही नहीं होगी, सही से आपका कल्टीवेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चरल चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगे। व्हाई वुड यू डू दैट, राइट? बेसिक क्वालिटी, वेरी गुड, बेसिक क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज नॉट वॉश्ड अवे, यस। तानिया कह रही है मैम मैंने ये सेक्शन स्किप किया था, यस बेकार। अच्छा, तानिया कह रही है बंगर से बेकार। देखिए बंगर से मैं बेकार, हाँ आप ऐसे याद रखने के लिए देखो ट्रिक्स ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छे ट्रिक्स इसमें पता चल रहे हैं। अगर यही ट्रिक्स क्लासेस में आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि बी से बंगर, बी से बेकार, ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी याद रखनी होती हैं, यू हैव नो अदर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। एक्रोनियम्स के जरिए या छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बना के आप चीज़ें याद रखते हो, है ना, क्योंकि इतना कुछ है याद करने के लिए, एन नंबर ऑफ थिंग्स। बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप्स एंड heavy rainfall, foothills of the Himalayas have been affected by the soil erosion, right? हमें पता है कि वहाँ पे बहुत frequent soil erosions होते हैं because the slopes in the Himalayas are very steepy in nature. जैसे बोलते हैं ना पतले हैं, बहुत ज़्यादा steep है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कूनी है, उस तरीके का। तो foothills of the Himalayas have been affected by the soil erosion because of that only, है ना। अच्छा, state 2 ways in which forest help in protecting the environment. Very easy. कैसे protect करता है? Forest reduce the risk of flood. Also forest prevents soil erosions and drought. Right? बहुत easy है ये सारी चीजें समझना, है ना। Mention 2 ways in which tropical desert vegetation has adopted to its environment. ये कितना easy है। Leaves are reduced into spines to prevent the loss of water and both leaves and stems have a thick waxy coating. ये आपको बिल्कुल factual है। अगर आपने tropical desert vegetation अपना अच्छे से एक notes prepare किया होगा तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको आंसर कर पाए होंगे। In which of the natural vegetation belt is Sundari tree found? Why is tropical deciduous forest commercially the most exploited forest belt of India? तो सुंदर बंस में आपको ये सुंदरी ट्रीज जो हैं, ऐसी मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको बताए थे क्लासेस में कि आप इस तरीके से, आई एम श्योर ऐश्वर्या क्योंकि बहुत एक्टिव रही हैं थ्रू आउट द क्लासेस, तो आई एम श्योर ऐश्वर्या को याद होगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो है, फनी टर्म्स या याद रखने के लिए सुंदरी से सुंदर, इस तरीके से एक बैलेंस बना के हम चलते, चार्ट बना के चलते ताकि चीजें याद रहे, है ना। डेसिडस फॉरेस्ट आर कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, है ना, कमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि ये वो लेस डेंस होते हैं, बहुत जल्दी बहुत आसानी से कट सकते, जो मोस्टली या आप बोलोगे मोस्टली डेंस होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें काटने में, पीटने में, जाने में, करने में बहुत टाइम लगता है। जो स्पार्सली होते हैं वो बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं और आप गिरा भी सकते हो आसानी से, है ना। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल टिम्बर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यूएबल टिम्बर प्रोवाइड करते हैं एंड दे प्रोवाइड वेरियस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक सैंडलवुड और बाकी चीज़ें जो कमर्शियल तरीके से यूज़ करी जाती है। तो इसीलिए कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट बेल्ट जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट है, क्योंकि इसमें चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, नेम वन रीजन इन इंडिया वर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड, तो बहुत इजी है, आपको एक रीजन का नाम बताना है, तो आप कुछ भी ले लो, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स,
हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड। मैंने बहुत सारे नाम दे दिए, आपने 3 मार्क्स में ये दोनों करने थे, यानी 1.5 मार्क्स का करना था आपको, है ना। तो आपको ऐसे डिवाइड करके चलना था। मेंशन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन सूटेबल फॉर टेम्परेचर, रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर, है ना, फॉर इट्स ग्रोथ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ग्रोथ क्या है, तो हमें पता है ना कि हमारा जो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया का, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही है। या अमेजन चले जाओ या बाकी और ग्रीन बेल्ट्स में चले जाओ, तो रेनफॉल जो है वो 250 सेंटीमीटर के आसपास हमें चाहिए होता है ना, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं ये बहुत डेंसली ग्रीन रीजन्स होते हैं, है ना। वेरी गुड। देखिए वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट सब लिख रहे हैं कमेंट में। अंडमान निकोबार आइलैंड, वेरी नाइस। प्रोवाइड टिम्बर, सैंडलवुड, डेविल फीनिक्स, बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। गिव द रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका रीजन देना है आपको 2 मार्क्स में। तो आप समझ लो ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, 1-1 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नीड्स द सपोर्ट ऑफ इरिगेशन। कैसे? इरिगेशन इज इम्पोर्टेंट ना, क्यों? क्योंकि सीजनल जो है हमारा जो रेनफॉल है वो सीजनल है नेचर में, तो ऑब्वियसली कुछ क्रॉप्स को वाटर की जरूरत होती है, दे रिक्वायर वाटर एंड व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द रेनफॉल, देयरफॉर वी डिपेंड ऑन इरिगेशन एक्टिविटीज आल्सो बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द नीड ऑफ हैविंग वाटर. Northern India mostly have very fertile region, porous, soft soil, making it easier to dig up wells. So why well irrigation is very popular means of irrigation in the Northern India is one of the reasons आपको देने थे. Distinguish between inundation canal and perennial canal. तो ये आपका differences है. Full of water, they have water throughout the year, only wet seasons में इनके पास होता है, इनके पास throughout the year होता है. Irrigates only low lying areas of the land, irrigates all type of land. तभी तो perennial canals बहुत पाए जाते हैं ना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, है ना. तो ये दोनों आपने अगर ये 2 भी दिया होगा, या क्योंकि ये हमारा 1-1 मार्क्स का था, है ना, तो अगर आपने 1-1 पॉइंट भी दिया होगा, 2-2 पॉइंट भी दिया होगा तो सफिशिएंट, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं थी. वेयर इन इंडिया इज द टैंक इरिगेशन मोस्ट वाइडली यूज्ड? गिव 1 फैक्टर, मेंशन 1 एडवांटेजेस यूजिंग टैंक. मतलब ये क्वेश्चन जो है मोस्टली इरिगेशन, मैंने आपको बोला कि वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पसंदीदा पोर्शन रहा है, या रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा, या मॉनसून जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट, टीचर्स फेवरेट. ये मेरा TF जो है, मैं थ्रू आउट द क्लासेस, ऐश्वर्या को पता होगा कि TF टीचर्स फेवरेट मेरा एक वर्ड है जो मैं हर क्वेश्चंस जब आपको बताती हूँ तो पोर्शंस बताती हूँ. दिस इज अ टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट पोर्शन, है ना. तो TF वाले पोर्शन से है ये सारे क्वेश्चंस. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वाइडली टैंक इरिगेशन यूज्ड होता है. रॉक्स फाउंड इन द सडन India is impermeable, which prevents rainwater to store beneath the surface. Advantages of tanks जो है, obviously in the uneven rocky plateau of Peninsula India, rainfall is highly seasonal. So tank का इरिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, कल्टीवेशन को, एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने के लिए यूजफुल है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक तरीके से, है ना. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अगेन बहुत आसान है. रेन वाटर, मैंने बार बार बोला था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब मैंने पेपर देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जितने स्टूडेंट्स ने अगर क्लासेस अटेंड करी हैं या नहीं भी करी, अगर एनालिसिस भी देखा है, हमेशा क्वेश्चन आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, हर साल आया है. तो ऐश्वर्या, मी, लॉट ऑफ यू हु हैव जॉइन, दैट्स ऑल राइट. स्ट्रेंज नेम आईडी से आपने ज्वाइन किया, डेविल फिनिक्स, दैट एब्सोल्युटली फाइन. देखिए मनवीर कौर भी कह रहे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है, वो सब कह रहे हैं कि मैम ये पोर्शंस आपने बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, और बहुत इम्फेसाइज करके जब मैंने आपको बताया था तो बोला था कि इसमें 4 स्टार लगाइए, 6 स्टार लगाइए, पुट 6 स्टार्स हियर, पुट 2 स्टार्स हियर, है ना. तो ऐसे करके मैंने आपको एम्फेसाइज करा था. एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है. So collecting, storing, conveying and purifying rainwater is what, you know, when you store it somewhere, it is called as rainwater harvesting. और rainwater harvesting क्यों important है? बहुत ही आसान है. 1 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना था
तो 3 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन है, तो अगर आपने 1 मार्क ऊपर लिया है तो 2 मार्क्स में ये 2 पॉइंट लिखोगे, है ना। तो क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप बहुत से बहुत 1-2 सेंटेंस में डिफाइन करोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे, तो दो मार्क्स का जो वेटेज है वो आपको इंपॉर्टेंस में देना था। तो आई एम श्योर सब लोगों ने दो इंपॉर्टेंस तो एक सेंटेंस का लिखा ही होगा, है ना, लॉट ऑफ यू। ओके, ओल्ड सब्सक्राइबर 10th क्लास, दैट्स ऑल राइट सिमरन, ठीक है, मैं आपको सिमरन ही बुलाऊंगी। तो आई एम श्योर यू आर वेरी एक्टिव एंड यू आर कॉमेंटिंग ऑल्सो। तो आपका भी एग्जाम मुझे पता है, आई एम श्योर अच्छा गया होगा। अच्छा, यू आर एन ओल्ड बैच, तो सबसे आप पूछ भी रहे थे कैसा हुआ सबका एग्जाम। आई एम श्योर सबका ही अच्छा हुआ होगा और अच्छा जाना भी चाहिए क्योंकि पेपर इजी था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर डिफिकल्ट था, है ना। अच्छा, हिस्ट्री और सिविक्स जो था वो आपका थोड़ा सा लेंदी पेपर था, है ना। इजी तो था लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव बहुत था, उसमें लिखने के लिए बहुत था आपके पास, तो बहुत कट शॉर्ट करके चलना पड़ रहा था। ज्योग्राफी में लिखने के लिए ज्यादा नहीं है और इजी है, 2-2 पॉइंट, एक सेंटेंस, 2-2 सेंटेंस, खत्म। क्योंकि क्वेश्चन ही 2-2 मार्क्स का पूछ रहा है, पूरा हिस्ट्री थोड़ी ना लिखोगे बैठ के, पैराग्राफ थोड़ी ना लिखोगे, एक पॉइंट में खत्म करना था, है ना। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया दैट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम। What is the importance of magnesium from the iron and steel industry? Iron and steel बार बार बताया, iron and steel important है, cotton textile important है, silk industry important है। तो जो important बताया था मुझे लगता है वो सब आया। तो मध्य प्रदेश is the largest producer and magnesium क्या करता है, remove oxygen and sulfur when iron ore is converted into iron। तो इसीलिए उसका importance important है, उसका presence होना जरूरी है ना। Why is conventional source of energy not considered an eco-friendly source of energy? क्यों नहीं है, ये बहुत ही आसान है। मुझे तो लगता है ये क्लास 6 और 7 का शायद आपको 10th में क्वेश्चन दे दिया हो। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो बहुत टाइप के पोल्यूशन जेनरेट करते हैं। हमें पता है ना कि कितना एयर पोल्यूशन होता है, कभी एसिड रेन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है इन्वायरमेंट में रिलीज होती है जब हम कन्वेंशनल सोर्सेज, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबशन, केमिकल्स, और आप देखोगे ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, सारे स्मोक्स के फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म में, है ना। तो आप आराम से बता सकते हो कि वो इको फ्रेंडली क्यों नहीं है वो एनर्जी, है ना। देखो आ गया क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल, हीराकुड, भाखड़ा नंगल, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। 1 मार्क में क्यों ना दिया हो लेकिन क्वेश्चन आया बिल्कुल लास्ट 10 years 5 years के उससे है। एसएससी का एग्जाम है, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका एसएससी का पेपर है तो आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू इन दैट ऑल्सो, बट अभी फिलहाल के लिए ज्योग्राफी करते हैं, है ना। हाउ इज भाखड़ा नंगल डैम beneficial for Punjab? Name 2 states where coal is mined in abundance. Mention 1 advantage of using wind energy. बहुत आसान है। विंड एनर्जी को मैंने ऐसे डॉट में इसलिए दिया है आपको क्योंकि इसमें बहुत पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक्सीलेंट, कुछ भी मतलब सही, बट एक्सीलेंट कन्वर्जन ऑफ एफिशिएंसी है। विंड इज कंसिस्टेंट इन द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म, विंड पावर ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल लैंड, है ना। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस थे हमारे। भाखड़ा नंगल डैम वाज अ पार्ट ऑफ लार्ज मल्टीपर्पज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। उसका एम क्या था, प्रिवेंट फ्लड इन सतलुज बीज रिवर वैली एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन। तो इसीलिए वो बेनिफिशियल था पंजाब रीजन के लिए, है ना। नेम द फॉलोइंग अ मिनरल यूज्ड टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत आसान, यूरेनियम। बोल रहा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वाइड स्प्रेड क्यों है इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी ही पाया जाता है, बट उसके अलावा और भी चीजें। पूछ रहा है ऑफ शोर ऑयल फील्ड इंडिया में क्या है, मुंबई हाई, 176 किलोमीटर वेस्ट कोस्ट। ये हो सकता है बहुत सारे मेरे बच्चों को मे बी याद करने में या याद रखने में प्रॉब्लम हुई होगी, बट 1-2 मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर के भी 2 आपने करे होंगे तो। आयुषी राउटेला मुझसे पूछ रही है, विल यू गिव रिप्लाई टू मी और शुड आई लीव। आयुषी आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं ऊपर देखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है।
इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या क्या है वो डिफरेंशिएशंस आप देखिए। मैंने तो आपको पूरी डेफिनेशंस दी है, आई हैव गिवन यू द होल डेफिनेशन राइट ऑफ इट। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास डिफरेंशिएशंस होंगे, इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, इसमें हाई लेवल यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, ये आप एक पॉइंट में भी लिख सकते थे, है ना, अलग से, है ना। और यहाँ पे कैलकुलेटेडली मॉडरेटली लो इनपुट्स होते हैं कैपिटल और लेबर की, है ना। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें मिला के जुला के लिख सकते थे। फिर ये देखो 2 प्रॉब्लम्स बतानी है कि इंडियन फार्मर्स फेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सब में डॉट डॉट लगाया है, जिसमें मैंने डॉट डॉट लगाया याद रखना उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते थे, क्योंकि फार्मर्स का प्रॉब्लम हम सबको पता है, इरिगेशन प्रॉब्लम भी है, Ursil care in map, maybe I have written unique ID in place of index number and index number in place of unique ID. Check. बेटा इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आपको मतलब आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैप्स में ये होता है कि आपको वर्ड्स को लेके बहुत करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने ये मिस्टेक किया है, इन प्लेस ऑफ इंडेक्स नंबर आपने यूनिक आईडी लिख दी है या आपने उसको मेंशन किया है, वो हो सकता है आपके वहाँ पे पॉइंट्स कट जाए, मार्क्स कट जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर टीचर को आपका प्रायर जो चीज़ें हैं अगर वो देख रहा है और अगर उसको लग रहा है कि यू नो all your questions are correct and maybe this is a minor mistake, so it depends on the teacher's psychology also. अगर आपने मैप वर्क अच्छे से किया होगा तो शायद ये उसको नज़रअंदाज भी कर दे, maybe they will leave this part. Otherwise if there is a stern examiner, strict examiner, तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम होगी आपको। Anyway, coming back to this, numerous problems, बहुत प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, फर्टिलाइजर्स को लेके, टेक्निक्स को लेके, मार्केटिंग को लेके, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के पास, है ना। गिव वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड ऑफ सोइंग राइस, गिनिंग किसको बोलते हैं, और 2 पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। बहुत मुझे लगता है सारे लॉन्ग आंसर्स में ये सबसे इजी आंसर था। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंडर्ड, कि एक स्टैंडर्ड तरीके से उसके हेड हो, इमर्जिंग वीड्स, हर तरीके से सीडिंग्स, हर तरीके से एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, वो मेंटेन करता है। वो मेथड है एक जो राइस को सो करने के लिए हमें फॉलो करना होता है, वो बहुत एडवांटेजियस है, बहुत प्रॉफिट है उस मेथड का, तो वो फॉलो करते हैं। फ्रॉम दीज एक जो कॉटन बॉल्स होते हैं यूजुअली, जिनको हम हाथ से प्लक करते हैं, फाइबर्स को उनसे सेपरेट किया जाता है सीड से और फिर कंबाइन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिनिंग इन कॉटन। कॉटन एक्सट्रैक्टिंग भी आप बोल सकते हैं या कॉटन इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, कॉटन कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। तो ये गिनिंग का क्वेश्चन वहाँ से आया था। पल्सेस ड्राइड सीड्स होते हैं और उसके बहुत सारे आपको कॉमन पल्सेस के नाम लिखने थे। तो ये सारे लेंटिल्स, पीस, बीन्स, चिकपीस, ये सब हमारे कॉमन हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ईजी था, है ना। व्हाट इज मेंट बाय, आपका क्वेश्चन है रेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बहुत हमसे पूछे गए, ऐसे टर्मिनोलॉजीज वाले, जैसे प्रीवियस में गिनिंग पूछा गया, है ना, इसमें रेटिंग पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन अगर आपको टर्म्स, इंडस्ट्रीज अगर आपने पढ़ी हैं या एग्रीकल्चर पढ़ा है तो टर्म्स आप बता दोगे, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट था। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, अगेन वेरी इजी, क्योंकि टी प्लांटेशन कभी भी ज्योग्राफी में लीव मत करना, चाहे क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, कहीं तक भी पहुंच जाओ, टी प्लांटेशन कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना उसका। व्हाई इज पर्निंग नेसेसरी फॉर टी प्लांट, है ना। तो टी बुशेस जो होती हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे हमें कट करना पड़ता है या हमें पर्न करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है, कहाँ से सड़ रहा है, कहाँ से नहीं सड़ रहा है, कहाँ से कटना है, कहाँ से बढ़ रहा है ना। तो कन्वीनियंट है पिकिंग के लिए वो रेगुलर बेसिस में ना, आप रेगुलर बेसिस में एनालाइज भी कर सकते हो, ध्यान भी रख सकते हो। तो इसलिए पर्निंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टी प्लांट या टी जेनरेट करना एक बहुत आम बात नहीं है, उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चाहिए और बहुत ध्यान से
करना पड़ता है ना। टी और कॉफी जो है ग्रोन यूजुअली एन एलुवियल सॉइल है, वही सॉइल रिक्वायर्ड आपको बता रहा है। और प्रोसेस आपको रेटिंग का प्रोसेस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एम्प्लॉइंग द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर ऑन प्लांट टू डिजॉल्व और रॉट अवे मच ऑफ द सेल्यूलर टिश्यूज जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं या रॉट वाली जो उनमें कैपेसिटी होती है, उसको डिजॉल्व करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स द सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से फाइबर को कैसे सेपरेट करना है, दैट इन दैट रेटिंग हेल्प्स। सो दैट इज द प्रोसेस। बहुत मैं नहीं बोलूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल का था, इजी से थोड़ा सा अबव। तो आपको नॉलेज की जरूरत थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। हाउ आर इंडस्ट्रीज जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत आसान है। इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में लिखना था। एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली जो है हमारे इंडस्ट्रीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बोल रहे हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। और ईच टाइप ऑफ इंडस्ट्री का आपको एक एक एग्जाम्पल देना है हमें। तो एग्रो बेस्ड मोस्टली जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है ना, शुगर है, जूट है, टेक्सटाइल है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, हर चीज हो गई, है ना। अच्छा, इंडस्ट्रीज दैट यूजेस फॉरेस्ट रॉ मटेरियल्स, जैसे कि क्या हो गया, टिम्बर हो गया, सैंडलवुड हो गया। अभी ये सिमरन और बाकी लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस ऊपर लिखे ना हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, या वहाँ पे क्या क्या जनरेट होता है कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ना। तो इन सब बहुत आसान क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट बेस्ड चीज़ें क्या होती हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ईजी था। What has made Mumbai an important center for cotton textile production? 2 पॉइंट लिखना है आपको। And why are the petrochemical products are in great demand in India? So city हमें पता है ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वार्म क्लाइमेट है जो सपोर्ट करता है कि कॉटन उस तरीके से ग्रो, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बोलूँ, पोर्ट जो है मुंबई में लोकेटेड है तो इजीली वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी हेल्प करता है। तो उस तरीके का ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कॉटन अच्छे से ग्रो कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज अवेलेबिलिटीज ऑफ स्किल्ड लेबर, बाकी चीज़ें हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है expansion of cotton industry in the Mumbai region, है ना। Petrochemical products are gaining popularity in the modern times because they are cost effective. Cost बचाती है. They are very economical and stable, cheaper in the market, and they are produced on a mass scale, very large scale basis. They are produced. So it was again not very easy, but intermediate as well, right? Mention 2 problems faced by the sugarcane industry. Where is Tata Steel located? Why is steel industry losing the market in the recent time? Now this is the question which was not very easy. B and C. B, I guess very easy to understand. It's Jamshedpur, right? You are not supposed to write the establishment of it. I have given you for a general understanding, general knowledge basis, but fine. Jamshedpur, even if you have written this, sufficient. Right, now domestic skill, this was the question which was quite analysis and as well as historical in nature, because we know that in the global market China started the production or extraction of silk, right, and that's how India has a share in the market, but because China is a old player in that, so it has declined the you can say the name or the significance of India producing silk as well, right? So China obviously gives a very tough competition to India, and that's how silk industry has lost, especially in India in the recent time, it has lost its significance, right? And also there is a lot of price fluctuation. Even if you go from north to south and from west to east, in India as well, the prices of silk would vary from region to region. Somebody will give you a silk sari in 1,000 and somebody will give you in 2,500, more than 3,000, 5,000. So that also depends on the quality of the silk as well, but I'm just telling you that that's how the prices varies. That's how fluctuation has somehow
contributed in losing the market essence in the recent time of silk. And where is located? Tata, Jamshedpur, obviously. And what are the problems? Problems that sugar industry deals with: low production capacity, politicization in fixing the price of the sugar, and etc. etc. Many problems are there, even if you would have written two sufficient. Why it is important to have a well-developed means of transport in India? I think this is very, very easy one. Why it is important? For proper communication, for proper movement of materials from one region to another, uses of natural resources, from transferring of everything from one region to another requires a transport service, right? So that is why it is important. Now this was just given to confuse you, right? This quotation has given just to make a question or give a tough touch to the question, but it was not at all difficult at all. Question was, airways is gaining popularity in India. Explain in two ways. Why it is gaining? Because emergency services are provided by airways. Very quickly you can move from one place to another. Comfortable and easy, right? Unbreakable journey and rapidity. Obviously very fast service is provided to you. So it is gaining popularity because of the fast service that it is giving you, comfort that it is giving you, right? So these were very common reasons as why it has become very popular. Why are South Indian rivers not ideal for inland water transport? Mention two advantages of waterways. Two advantages of waterway, again very easy. Used in defense, it's an advantages, right? And it is good for carrying heavy goods. And for the first one, South Indian rivers are not perennial. Why? Because not flowing throughout the year. Perennials flowing throughout the year, right? So South Indian rivers not ideal for inland water transport, because that those are not flowing one. For transportation, the water has to move, the water has to flow. If it is not flowing for throughout 365 days, what will happen? There'll be an obstruction in communication, right? So that is why those are not preferably opted for transportation, right? Why are roadways considered more important than any other means of transport? Mention two advantages again. One question bit intermediate, one question easy. One question easy, one question intermediate. This was the level of the paper. They have decided no tough question will be given, easy, intermediate, right? Road transport is the most economical. Why? Very easy. Door-to-door services provided, highways, long distance routes can be taken up. So all these are advantages. Two advantages of railways as mean of transport: reliable. Nothing will be happen to the good, right? It is not even affected by bad weather. Sometimes airways are affected by bad weathers and flights get delay also, right? But over here, you don't have to worry about it. It is all covered inside that train, right? So it can carry large amount of cargo in terms of volume and weight, but flights cannot do that, right? So these are the advantages. Why should waste management be practiced in every school? If you see the perspective, in the map, 80 degree, 30 degree east and 22.5 degree east are the same. Ayushi, I am looking at your question. So that was beta in the previous slide. I'll show you. This was the main centered where you were supposed to draw it 80 degree, 30 degree east in the map, which was the question in the topography, I think, right? That is what the answer was. So if you would have drawn it like that, you are telling no beta, it's not the same. Yes, absolutely, yes. In map 82.5 degree east are the same. It's absolutely the same. Yes, it's same. You're asking whether it was same.
the thing is, beta, what happens is here Ayushi has the main question. Why was it in the syllabus? This is the main part. Now in topography, what happens is, beta Ayushi, this is especially for you. What happens in topography? Once you are a player of topography and maps, nothing is difficult for you, even if it is from outside the syllabus. And that is what ICSE wants to make you. ICSE will always give you something which is not from the outside syllabus, but they will ask you to use your brains. Use it. So if you have taken 80 degree 30 east as to 82 degree and a half degree east are the same, you're using your brains, right? So it is the same. So they want you to use your brains basically. See the map, extract, take it out, things from there and use your brains. That is what the strategy of ICSE is basically. So you don't worry, it is absolutely correct, right? Moving on to the next question, Ayushi. Why should waste management be practiced in every school? Very easy one. Why? Because you want to, improve the environmental problems. You want the people to pay more attention towards the natural resources and all these things. Very easy one. Mention one advantages and one disadvantages of dumping of the waste. As I have already told you, question from waste, lot of questions have come, right? So what are the advantages? Obviously, dumping of the waste sometimes, prevent it from burning, right? When you don't prevent it, less pollution is there, right? So that is the advantages. And disadvantages, obviously, it is the breathing ground for mosquitoes, flies. It creates bad odor as well, which smells badly when you just openly dump anything anywhere, right? So all these were the disadvantages. Briefly answer the following. How is segregation of the waste helpful? Mention one way in which we can reuse waste. Mention one benefit of composting. Very easy. Separating waste allows us to recycle more items, preventing their disposal in the landfills. Plastic water bottles are the worst enemy. This I have taken one example. You could have mentioned any example of any reusing of the waste. I have taken the example of plastic. Say suppose you have taken the example of any waste that you want to reuse it. Any tins, sometimes when you get at home, those cans and bottles and tins, etc. can be reused. And one benefit of composting, it improves the structure and health of the soil. Improves basically the structure, the quality of the soil by organic matter, right? So it helps the soil retain the moisture and the nutrients in it. So that is one of the advantages or benefit of applying composting as a technique. So very easy one. How is recycling of waste helpful? Give example. Waste management questions were there, right? Mention any one initiative taken by, okay, this was something which was current. Now, but current does not mean that it is not given in your book. If you are following Selena for ICSE, no, sand dunes and sand hills, beta, are not the same. Sand dunes basically, Mubashira, Ruhi, are basically the moving one. But sand hills are not the moving one. They are still. Sand dunes are something which keeps on moving in the air. Right, so those are, you can say, though the sand, the quality is there, the texture, the type of sand that you are talking about is there, but the movement, the location, changing of the location, mobility is there, is the difference part between the sand dunes and the sand hills, right? How is recycling of waste helpful? Give an example, recycling of the waste, and mention any one initiative taken by the government to manage the waste. Do you think all of you who have joined Ayushi, Mubashira, Ruhi, in fact Aishwarya, Simran, lot of you, do you think this question was difficult? Mubashira, will you please help me in that? Was this question difficult? No? Absolutely not, right? Quickly, looking for the answers. Recycle of the waste is helpful. How it is? Answer? How can you recycle it? By recycling it, you make new products. For example, used paper can be recycled to make
plates, toilet papers, etc. Right? Now this is something I have taken this example, but there were multiple examples. National Water Mission was there. Waste to Wealth Mission was there. Initiative of Swachh Bharat. I have given you more names here. The measures that were taken by the government to manage the waste. It can be in terms of air pollution, water pollution, solid waste, dealing with, because Swachh Bharat Abhiyan deals with wet waste as well as dry waste as well. You have to segregate. There are blue dustbins, there are green dustbins, right? What is the significance? So all these things are taught by government programs, by government policies. So these were the initiatives which were taken. National Water Mission was also one of the initiatives to clean rivers, to clean waters, right? Waste to Wealth Mission. All these were the missions taken up by the government. Even if you have given one name, sufficient to give you marks, right? So you would have balanced, you were supposed to balance the question this way. 3 marks, 2 question AB, 1.5, 1.5. So in 1.5, which means 1.5 marks में आपको कितना लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो 2 सेंटेंस, 2.5 सेंटेंस बहुत है 1.5 मार्क्स के लिए, है ना? So that's all that I had. No beta, Mubashira, Ruhi, sand hills and sand dunes, both of them are the natural, right? But this is what you're asking. They're all the natural features. So even if you have written sand dunes, sand hills, remains the same. As I'm telling you, the texture, the structure, the type of resource that you're talking about is sand, right? So in that particular sense, Mubashira, you will absolutely get your marks. Don't worry. I am just talking about the difference. So you asked me in the previous one, ma'am, are they the same? No, they are not the same. But if you were supposed to mark it on the map, you have reached to that level that you're talking about the sand as a symbol which is there, right? So whether it's a dune or a hill, doesn't matter. You know the symbol and you have written it there, you will get the marks. Don't worry. So in the topography, even if you're mentioning the required answer, absolutely fine. Yes, they're absolutely not the same. This is what I'm saying. But if you have marked it out, that's absolutely fine. I hope if the teacher examiner is there, if it's a easy examiner, they might give you marks as well because of the sand thing that you have identified, right? Maybe sometimes teacher give you marks on that also. Very good, Akhil. I expect that you will get 80 out of 80. I wish all my students who have joined the session, not joined the session, I wish all of you a very good luck for all your upcoming examinations. And I wish all of you in the next session when you will come and join and you will say that, ma'am, I've got 100 out of 100, I'll be the happy one to hear that, right? So all the very best, and that's all that I had for all of you in today's session. See you all in the next session where I'll have another analysis of different subjects as well. All the best. Bye-bye. Thank you.